Hello class 8 students, I am your maths teacher Nitin. In today's lecture 7, we will study some special products and two new identities. Okay, we are in lecture 7, so chapter 5 algebraic expression, and we will learn some special products. Okay, what are these special products? Some special products. Okay, now note these product students, they are very useful and learn them by heart. Now the first product is if x plus a and x plus b is given to you, x plus a and x plus b is given to you, then your answer will be x square plus bracket a plus b x plus ab. Okay. Now second one is x plus a and x minus b. In this case your product will be x square plus a minus b x minus ab. Right students? First case x plus a, x plus b. This is your answer. Second x plus a and this one is x minus b. This is your answer. Now third one is x minus a and x plus b. Okay, x minus a and x plus b, this will be equal to x square plus a plus b x minus a, x plus b will be equal to x square plus a minus b x minus ab, right? Now the fourth identity is x minus a, x minus b, both of these are minus, negative, then your answer will be x square minus a plus b x plus ab. Okay students, so note down these product, they will help you to find out the product इस फॉर्म में जो गिवन है सीधा हम यूज कर लेंगे इनको, राइट, एज एन आइडेंटिटी. क्लियर है? राइट डाउन. Now student, two more identities, write them. A cube plus b cube can be written as a plus b, right? A cube plus b cube can be written as a plus b, bracket start, a square minus ab plus b square. Okay, a cube plus b cube can be written as a plus b, a square minus ab plus b square. And the second is a cube minus b cube can be written as a minus b, bracket start, a square plus ab plus b square. Okay, now these two identities plus some product, special product जो अभी हमने किए हैं, you should learn them by heart, right? Now I will do some examples, आपको एक concept क्लियर हो जाएगा. Now find the product using identity. The question is find product using identity x plus a, x plus b equal to x square plus a plus b x plus ab. Okay, you have to find out the product using this identity. आपको specified कर दिया है. And the question is, first one is x plus 7
and x plus 5. Okay, this is the question, and you have to find out this product by using this identity. Okay, no issues. Identity देखिए, कंपेयर करेंगे x plus 7, here x a is equal to 7, a कितना है स्टूडेंट यहाँ पे 7 and b is equal to 5. Now we will use this identity, x plus 7, x plus 5 is equal to x square as it is आ जाएगा plus a plus b, and a is how much, 7 plus 5, x आ जाएगा plus ab means product, 7 5s are 35. Now this will be equal to x square plus 7 plus 5 is how much, 12x plus 35. So this is your answer student, right? So that's how you will use this identity. Clear है? Now one more example, second example, find the product of x minus 5 and x minus 6. Now student, both of these values are negative, both the brackets are negative. Now just check कि हमने दोनों वैल्यूज अगर नेगेटिव होती है तो हमने क्या आइडेंटिटीज लिखी हुई है, क्या आइडेंटिटीज लिखा है बेटे? बोथ द वैल्यूज आर नेगेटिव, व्हाट वी हैव रिटन, इफ x माइनस ए और x माइनस बी नेगेटिव होता है बेटे, x माइनस ए एंड x माइनस बी, देन वी यूज द स्पेशल प्रोडक्ट अभी हमने किया था, दैट इज x स्क्वायर माइनस ए प्लस बी, x square minus a plus b x plus ab, right? This is the special product which we learned just few seconds before. Now we know what is the value of a here, a is equal to 5, and what is the value of b, b is equal to 6. Don't write their symbol sign, right? Now put the value here, x square minus a plus b is how much, a plus b is 6 plus 5, 6 plus 5, x ab multiply करेंगे 6 into 5, right? So your answer will be x square minus 6 plus 5 is 11, 11x plus 6 5s are 30. This is your answer students, right? Clear हो गया how we will use these identities? Let me check my answer. X plus x minus 5, x minus 6, perfect, right? So that's how you will use these identities. Okay, good. Now student, we will use these two identities to find the product. Okay, now the question is find product. Very careful while doing this example students, because full exercise is based on these examples, on these identities. If you are not clear with these identities, then you cannot do your questions. Okay, so be very attentive. Right, now question 1, find the product. The question is 4x plus 3y, right? And second bracket 16x square minus 12xy plus 9y square, right? Now see the question very carefully. This is 4x plus y and 16x square minus 12xy plus 9xy. Now student, compare this equation with first equation. A cube plus b cube is equal to a plus b आपका ये रहा first bracket, then second bracket is a square, that is 16x square value लिखा हुआ है, minus ab is minus 12xy and b square is minus 9y square. आपको कितना मेहनत करना है स्टूडेंट? यू हैव टू ओनली रिकॉग्नाइज ए और बी, आपको रिकॉग्नाइज करना है. सो व्हाट इज ए हियर? ए इज इक्वल टू 4x एंड बी इज इक्वल टू 3y. ओके, आपने ए और बी कहाँ से लिया? फर्स्ट ब्रैकेट से आपको मिल गया. आइडेंटिटी हमारी फर्स्ट वन आइडेंटिटी यूज हो रही है. नाउ सी वी हैव टू राइट द प्रोडक्ट. ये पूरा का पूरा इस लिख सकते हैं ना, दिस इज रिटेन इन दिस फॉर्म. अब आप इसको कैसे चेक करेंगे? सी ए प्लस बी आपने रिकॉग्नाइज कर लिया, ए प्लस बी दैट इज 4x प्लस 3y. नाउ
16x square is, what is 16x square? It is square of 4x. Okay, plus AB कितना होगा हमारा 3 4 the 12xy. It is already written here. Minus AB that is minus 12xy. हमको कहाँ से मिला? A और B को मल्टीप्लाई करके 4 और 3 12xy. ओके, नाउ प्लस B स्क्वायर. व्हाट इज B? 3y का स्क्वायर. नाउ इट इज क्लियर स्टूडेंट. ये पूरा का पूरा आइडेंटिटी लिखा हुआ है. आपने आइडेंटिटी रिकग्नाइज कर लिया, ए और बी रिकग्नाइज कर लिए, प्रोडक्ट निकालना बहुत इजी हो जाएगा जब हमने वंस वी रिकग्नाइज द आइडेंटिटी. ओके, ये लिखा हुआ है. अगर आप इसको ओपन करेंगे तो यू विल गेट 4x स्क्वायर को ओपन करेंगे 16x स्क्वायर. ए का स्क्वायर को ओपन किया तो 16x स्क्वायर. ए बी लिखा माइनस 12xy. बी स्क्वायर को ओपन करेंगे तो यू विल गेट 9y स्क्वायर. नाउ फाइंड द प्रोडक्ट. अब प्रोडक्ट क्या होगा? इनको मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट ए क्यूब प्लस बी क्यूब. सो ए क्यूब कितना है आपका? योर आंसर इज इक्वल टू 4x क्यूब प्लस बी इज इक्वल टू 3y क्यूब. 4 4 60 64x क्यूब प्लस 3 3 9 3 27y क्यूब. सो दिस इज योर आंसर स्टूडेंट. वेरी सिंपल. आपको सिर्फ आइडेंटिटी रिकग्नाइज करनी है. वंस यू रिकग्नाइज द आइडेंटिटी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब है या ए क्यूब या माइनस बी क्यूब है, पुट द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी एंड फाइंड आउट योर आंसर. क्लियर है? गुड. नाउ स्टूडेंट, one more important identity we are discussing here. Now the identity is a cube plus b cube plus c cube minus 3abc can be written as. अगर आपके पास इस फॉर्म में कुछ है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? एक्सपेंशन करके, एक्सपेंड करके. इट कैन बी रिटन एज a plus b plus c bracket starts a square plus b square plus c square minus ab minus bc and minus ac bracket close. Is it clear to you? a cube plus b cube plus c cube minus 3ab can be written as a plus b plus c, a square b square c square minus ab minus bc minus ac. राइट. नाउ स्पेशल केस क्या है स्टूडेंट? यहाँ पे स्पेशल केस क्या होता है? नाउ द स्पेशल केस इज इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 आता है. अगर a b c 0 आता है, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 होता है, देन दिस होल right hand side will become 0, because 0 multiplied by any identity, any number will become 0. So in that case, if a plus b plus c is equal to 0, so our identity will become a cube plus b cube plus c cube is equal to 3abc. right? Clear है students? Cube of 3 number a cube plus b cube plus c cube minus 3abc, इस फॉर्म में कोई चीज़ लिखी हुई है, you can expand it like this way. You can write a plus b plus c, a square b square c, a square plus b square plus c square minus ab minus bc minus ac. Right? Now if a plus b plus c is 0, if you find that a plus b plus c is 0, then this whole right hand side will become 0 and minus 3abc will be transformed towards right hand side. So the identity will become a cube plus b cube plus c cube is equal to 3abc. Okay? Clear है? Good. Now the student, I am giving the example, find the value. Find the value of किसका वैल्यू निकालना है स्टूडेंट? फाइंड द वैल्यू ऑफ 28 क्यूब minus 78 cube plus 50 cube. This is the question student. Now A, B and C आपके सामने है. Find out the value of A. A is 28,
B is equal to minus 78 and C is equal to 50. Now add these values. A plus B plus C हमारा कितना आता है? A plus B plus C is how much? 28 plus 50 minus 78. This is equal to 0. That is A plus B plus C 0 आ रहा है, तो हमारा क्या केस बन गया स्टूडेंट? ये वाला केस बन गया. Now if A plus B plus C is equal to 0, then the value of A cube plus A cube, B cube, C cube क्या हो जाएगा वैल्यू? The value of A cube plus B cube plus C cube is equal to 3ABC. 3, what is the value of A? 28, B minus 78 and C is 50. When you will multiply this value, you will get your answer as minus 327600. Right? That's how you will use these identities. Okay, good. Now student, we will start our exercise 5.5, page number 94. Now question number 1, find the following product. Now student, question number 1 is based on special product. जो भी हमने lecture के starting में किए थे, you can simply use those special product and find out the values of the question number 1. So question number 1 you do yourself. I have done few examples बिल्कुल based on these special product, right? Now come to question number 2. Question number 2 is using identity evaluate the following. Again, okay, I will do the first part for this. Using identity evaluate. Okay, the question is 109 into 107. Now 109 and 107 can be written as 100 plus 9 and 100 plus 7, right? You can write in this way. Now question is using identity. Now here what using identity, x plus a, x plus b is equal to x square plus a plus b x plus ab, right? This is the identity. Now the value of x here is 100, x का value इधर 100 है, and the value of b, sorry, a is equal to 9 and b is equal to 7, right? Now we will do this question. X plus x square means 100 square, okay, plus a plus b is how much? 9 plus 7 is how much? 16. X means 100, here it is x means 100 plus ab means 9 into 7. Okay, now square of 100 will be 9 plus 7 is how much? 9 plus 7 is 16 into 100 is 1600 plus 7 9s are 63. Now add these values, student, you will get your answer. Now student, when you add these values, you will get your answer as 116663, right? So that's how you will attempt question number 2. Clear? Do all the questions of question number 2 neatly in your copies. Now come to question number 3. Now student, come to question number 3. Question number 3, fourth part I am doing here, student, fourth part. Okay, fourth part is 7x plus 2y (49x square minus 14xy plus 4y square. Okay, this is the question, student. Question number 4, you have to find the product. Now student, see, this is a plus b, right? And this is 49x square plus, let me check the question, it is minus, okay, minus 14. This is the question. Now here a is equal to 7x and b is equal to 2y. Okay, now remember the identity, that is a cube plus b cube is equal to a plus b
then a square minus ab plus b square. This was the identity. Okay, अब ये आइडेंटिटी को मुझे चेक करना है. यहाँ मेरा a कितना है 7x है, b 2y है, a प्लस b रिटर्न है. नाउ a स्क्वायर दैट इज 7 का स्क्वायर, 7 स्क्वायर इज 49. तो क्लियर हो गया. एंड b इज 4y स्क्वायर, तो b का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 to the 4y स्क्वायर. हमने आइडेंटिटी को रिकग्नाइज कर लिया. ये सारा लिखा हुआ है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, विल गेट a क्यूब प्लस b क्यूब. नाउ a इज इक्वल टू 7x and b is equal to 2y. Now solve this. 7 का cube is how much? 343. x cube plus 2 cube is 8y cube. This is your answer, student. Okay, so very simple questions based on these identities. Now do question number 3, all parts, subparts of the question number 3 on your own, students. Now question number 3 and question number 4, they both are based on these two identities. Okay, a cube plus b cube and a cube minus b cube. So question number 3 and question number 4 you do on your own, students. Now come to question number 5, simplify. Now come to question number 5, student. Question number 5 is simplify करना है हमको, right? Simplify. Now very easy question, student. First part I am doing here. First part is x plus 4, then bracket start x square minus 4x plus 16. Okay, then minus x plus 3 bracket starts x square minus 3x plus 9. Okay, now what is your job, students? आपको करना क्या है? You have to recognize these two identities. Okay, आपने काफी ने recognize कर लिया होगा. See, it is x plus 4, so this can be written as x cube plus 4 cube. Okay, यही तो आइडेंटिटी ओपन करके लिखा हुआ है इन्होंने. Then minus second, see this can be written as x cube plus 3 cube. Why? Because we have recognized the identity. Which identity चल रही है, कौन सी आइडेंटिटी यूज हुई है? तो यहाँ पे हमारा बेटा a क्यूब प्लस b क्यूब आइडेंटिटी यूज की हुई है. इसका प्रोडक्ट आएगा ये और इसका प्रोडक्ट ये आता है. ठीक है, नाउ वी विल सॉल्व दिस. x क्यूब प्लस 4 का क्यूब है 64, माइनस है, अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे. 3 3 9 3 27, माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब कैंसिल आउट. 64 माइनस 27 इज हाउ मच? 14 minus 7 is 7, 5 minus 2 is 3, 37 is your answer, student. See कितना हमने इजी हो गया है आइडेंटिटी यूज करके इसको सिंप्लीफाई करना. ठीक है, तो यूजिंग आइडेंटिटीज ऑल्सो सेव योर टाइम एंड ईजी हो जाता है क्वेश्चंस. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5 इज डन. डू ऑल रेस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 ऑन योर ओन. नाउ स्टूडेंट कम टू क्वेश्चन नंबर 7. ओके, क्वेश्चन नंबर 7. Now come to question number 7, student. Question number 7, exercise 5.5, page number 95. Okay, question is if a plus b plus c is equal to 6, a plus b plus c is equal to 6, ab plus bc and ca, ab plus bc plus ca is equal to 11. What you have to find? Find the value of, find a cube plus b cube plus c cube minus 3abc. Okay, now this is the question, student. Now the last identity जो हमने की थी, if you remember that a cube plus b cube plus c cube minus 3abc is equal to a plus b plus c, right? a square plus b square plus c square, a square plus b square plus c square minus ab minus bc and minus ca, right? ये हमने आइडेंटिटी किया था. हमको वैल्यू निकालना है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc का. ओके, सो वी विल पुट द वैल्यू ऑफ a प्लस b प्लस c, इट इज इक्वल टू 6. हमने इस प्लेस पे 6 रखा. देन a स्क्वायर
a plus b plus c. Now student, we don't have the value of a square plus b square plus c square. So let us find the value of a square plus b square plus c square first. Okay, so I am finding it here. Now a plus b plus c is equal to 6 हमको given है, तो a plus b plus c is equal to 6. Square both side. So you will get a plus b plus c का square is equal to 36. Now open this bracket. A square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2ca is equal to 36. राइट, ये हमने आइडेंटिटी ओपन किया स्टूडेंट. a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर कैन बी रिटन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc प्लस 2ca. राइट, यू कैन राइट दिस. नाउ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हमको नहीं मालूम, 2 कॉमन लेंगे, ब्रैकेट में आ गया ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 36. नाउ ए बी प्लस बी सी प्लस सी इज हाउ मच? ए बी प्लस बी, ये इट इज गिवन एज टू 11. तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू 11 इज इक्वल टू 36. सो a square plus b square plus c square is equal to 36 minus 22. 6 minus 2 is 4 and 3 minus 2 is 1, 14. तो a square b square c square बेटा हमको यहाँ से मिल गया 14 वैल्यू. Now we will use it here. We will write this value here. तो it will 6 a plus b plus c 6 आ गया. a plus b square c square का वैल्यू बेटा हमने यहाँ से फाइंड आउट किया into 14. Now माइनस ए बी हमने माइनस कॉमन लिया, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी इज हाउ मच? 11. तो वी विल पुट द वैल्यू हेयर 11. 6 इंटू 14 इंटू माइनस 11. So it will be equal to 14 minus 11 is 3. 6 into 3 is equal to 18. Okay, the value of a cube plus b cube plus c cube minus 3abc is equal to 18. Okay, now question number 11 student. Question number 11 exercise 5.5 is find the value. Find the value. Right, now I am doing the second part for you here. ठीक है, second part is 48 cube minus 30 cube minus 18 cube. Okay, this is the question. Now all these are cube. First of all check a is equal to 48, b is equal to minus 30 and c is equal to minus 18. Check a plus b plus c is how much? If a plus b plus c is equal to 0, then we will use our special identity. Now a is 48 minus 30 and minus 18, that is 0. A plus b plus c is equal to 0 student. Now when a plus b plus c is equal to 0, then what is the cube of the given number? Then a cube plus minus b cube plus minus c cube is equal to 3abc. Right, so what we will do, we will multiply 3 multiply by a is 48 multiply b is minus 30 multiply by c is minus 18. You will get your answer. Now student, when you will multiply these values, you will get 77760 as your answer students. Right, so that's how you will do the question number 11 all parts. Question number 12 and 13 you can easily do on your own using identities. Your exercise 5.5 is over students. Do each and every questions neatly in your copies. Your copies will be checked by the teachers. Okay, bye bye, take care.